Hello students, welcome to tutoringcluster.com. Now in this video we will be talking of type 5 problems. Let us understand first the concept behind it. Okay, so what is the concept? Okay, so type 5, these are of the form 0 to the power 0. So if you come across a limit, let's say आपको कोई फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट करनी है और अगर वो 0 टू द पावर 0 ये फॉर्म में होगा तो आप उसे कैसे सॉल्व करना है, राइट? ओके, सो लेट्स से यू आर हैविंग अ लिमिट एज x टेंड्स टू a f of x to the power g of x. Okay, so let's say f of a it is 0 and g of a it is 0. So in this case, this will be of the form 0 to the power 0, right? Okay. So to solve this, what you have to take? You have to take a logarithm on both sides. So log L, which is equal to limit as x tends to a log of f of x to the power g of x, right? तो हमें एक लॉगरिथम का फॉर्मूला पता है, log ऑफ m टू द पावर n. क्या होता है ये? n इंटू लॉग m. बस यही हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले. सो दिस विल बी इक्वल टू लिमिट एज x टेंड्स टू a g ऑफ x इंटू log ऑफ f ऑफ x. इज इट राइट? ओके, सो नाउ यू हैव कन्वर्टेड दिस इन. देखिए अभी क्या बनेगा ये? g of x is what? 0 into, no, log 0 it is what? Infinity. So now this has become 0 into infinity form, right? And we have already discussed in our previous videos how to deal with limit involving 0 into infinity. Okay, अगर 0 into infinity आता है तो हमें कैसे लिमिट फाइंड आउट करनी है ये हमने प्रीवियस वीडियो में देखा हुआ है, राइट? ओके, so let's say after finding this, okay, after finding this limit, let's say your answer is B. Now still लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? log ऑफ L है. हमें बेसिकली क्या फाइंड आउट? L फाइंड आउट करना है. सो दिस विल बी टू द बेस E. सो क्या आता है? दिस विल बी L विल बी E टू द पावर B. ओके, सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व इट, राइट? एक बार फिर से देख लेते हैं. देखिए टाइप 5 है, इट इज ऑफ द फॉर्म 0 टू द पावर 0. लेट्स से आपको एक लिमिट दिया हुआ है, function is f of x to the power g of x, and let's say f of a is 0 and g of a is 0. तो हम अगर हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं तो 0 टू द पावर 0 आएगा, राइट? सो टू सॉल्व सच टाइप ऑफ फॉर्म आपको क्या करना है? यहाँ पे log लेना है ऑन बोथ साइड. सो log ऑफ l बेसिकली इट इज टू द बेस e, ओके, एंड लिमिट एज एक्सटेंड्स टू ए log ऑफ दिस फंक्शन, राइट? सो वी नो दैट log ऑफ m टू द पावर n, हम इसको कैसे लिख सकते हैं? n इंटू लॉग m, n इंटू लॉग m. सो बस g ऑफ x ले लिया इंटू log ऑफ f ऑफ x. नाउ दिस विल बी ऑफ द फॉर्म 0 इंटू इन्फिनिटी, राइट? सो लेट्स से आफ्टर फाइंडिंग दिस लिमिट आपको उसका आंसर आता है b. सो आपको लिमिट कैसे फाइंड आउट करनी है? e टू द पावर b. ओके, दिस इज द बेस e टू द पावर b, राइट? ओके, कुछ एग्जांपल देखते हैं so that आपको concept clear हो जाएगा. Okay, let us see example. First example, limit as x tends to pi by 2 cos of x to the power cos x, cos of x to the power cos x. Okay, so how to solve this? Okay, what I have told, you have to take the, it is 0 to the power 0. Okay, what is cos pi by 2? It is 0, and so this is of the form 0 by 0, right? Okay,
So I am taking logarithm on both side, limit as x टेंड्स टू पाई बाई टू. अगर यहाँ पे log लेते हैं तो क्या आएगा, ये cos x इंटू log of cos x. Is it right? Okay. Now check it is which form. So this is what cos pi by 2, it is 0 into log 0, it is infinity. So we have successfully converted it into 0 into infinity. So how to solve this? Okay, now can I write this as limit as x tends to pi by 2? Okay, so मैंने आपको पहले ही बताया है, कोई भी फॉर्म हो उसको हमें 0/0 या फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी ये फॉर्म में लाना है. So this will be, sorry, this will be cos of, okay, क्या आएगा यहाँ पे देखिए, 1 अपॉन कॉस बन जाएगा. ओके, 1 अपॉन कॉस बन जाएगा, तो क्या आएगा यहाँ पे sec x. ओके, राइट. सो नाउ चेक इट इज विच फॉर्म. सो log 0 it is infinity divided by sec pi by 2 it is infinity, right? Okay, so now we are going to use L'Hospital rule. So using L'Hospital rule, क्या करना है हमें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का क्या लेना है, डेरिवेटिव. दिस विल बी लिमिट एज x टेंड्स टू पाई बाई टू. नो लॉग ऑफ कॉस एक्स, इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स, राइट, डिवाइडेड बाय सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, सेक एक्स इंटू टैन एक्स. ओके, राइट. सो 1 upon cos x is what? See, 1 upon cos x is nothing but sec x. So this it will get cancel out. Right? Okay. देखिए कैसे ये सॉल्व कर सकते हैं. लिमिट एज x टेंड्स टू पाई बाई टू. दिस इज माइनस साइन एक्स. ओके, एंड tan x को मैं कैसे लिखता हूँ, साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स. सो यहाँ पे आ जाएगा कॉस एक्स. So sin x and sin x it will get cancel out, right? So what this will be, so limit as x tends to pi by 2 minus cos x. So cos pi by 2, what is cos pi by 2, it is 0, right? See, minus cos of pi by 2. Okay, so this will be 0. यहाँ पे क्या है, it is log of L to the base e. So therefore L will be e to the power 0, and what is e to the power 0, it is 1. So this will be your answer. Okay, so I hope this example is clear, right? और कुछ example देखते हैं. Okay, note down. So this is basically a type number 5, 0/0. Already we have discussed type 1 to type 4. If still अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे होंगे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो. मैंने स्टेप बाय स्टेप सारे एग्जांपल आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं कि क्यों ये स्टेप करनी है. हर एक स्टेप में डेरिवेटिव भी आपको बताया है कि कैसे निकालना है. सो आई होप ये सीरीज आपको काफ़ी यूजफुल होगी. सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द यूनिट YouTube channel. So let us see now second example. Limit is given as limit x tends to infinity 1 upon x to the power 1 by x. So पहले तो हमें क्या देखना है कि it is in which form. Okay, डालिए x, क्या करना है, x tends to infinity. So 1 upon infinity it is 0, 0 to the power 0 form, right? Okay, so क्या करना है, you have to take log on both side. This will be limit as x tends to infinity. ये क्या बन जाएगा, 1 by x into log of 1 upon x, right? So limit as x tends to infinity. Again we will try to bring this in 0/0 or infinity by infinity. Now what is log of 1 upon x? Seen, log of 1 upon m, this is what, log 1 minus log m.
What is log 1? 0 minus log m. So basically this is nothing but minus log of m. So minus log of x to the power, to the denominator will be what? This x and देखिए मैंने इसको जो है इसके बदले क्या लिखा है? माइनस लॉग एक्स. दिस इज द रीजन राइट. ओके. So what will be next step? Now please check the form. Is it 0 by 0? See here, log infinity divided by infinity. So basically it is what? Infinity by infinity form. It is what? Infinity by infinity form. Okay. How to solve this? Use the L'Hospital rule. Okay. So this will be limit as x tends to infinity minus log x का डेरिवेटिव कहा जाएगा? इट विल बी 1 अपॉन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स का डेरिवेटिव आएगा 1. सो अगर हम इन्फिनिटी डालते हैं 1 अपॉन इन्फिनिटी, व्हाट इज 1 अपॉन इन्फिनिटी? 1 अपॉन इन्फिनिटी इज 0. सो बेसिकली जब हम x इज इक्वल टू इन्फिनिटी डालेंगे हमें क्या मिलेगा? 0. नाउ बेसिकली दिस इज व्हाट? लॉग ऑफ l टू द बेस e. So what will be limit? Limit will be e to the power 0 which is equal to 1. Not necessary कि हमेशा आंसर 1 ही आएगा. It can be anything. Okay. Right. So a very important examples, you can find such type of examples in your exams. Okay. Whether it is MCQ or whether it is conventional type, आपको 0 to the power 0 form काफी important है. बहुत बार आपको इसमें क्वेश्चंस जो है मिल जाएंगे. और एक एग्जांपल देखते हैं सो दैट दिस कंसेप्ट विल बी क्लियर. लिमिट एज x टेंड्स टू 1, 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1 अपॉन log of 1 minus x, right? Okay, so let us try to solve this solution, right? Okay, पहले तो it is 0 by 0 form, no doubt. Okay, now क्या करना पड़ेगा हमें? log ले लेते हैं पहले. log of l, this will be limit as x tends to 1. ये क्या बन जाएगा? ये जो टर्म है ये नीचे आ जाएगी. 1 अपॉन log of 1 माइनस एक्स इंटू log of 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट? अभी देखिए log of mn. What is log mn? This is nothing but log of m plus log of n. So log of 1 minus x square, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? log of 1 minus x 1 plus x, a square minus b square, right? a plus b, a minus b, is it right? So how I can write this? This is nothing but log of 1 minus x plus log of 1 plus x, right? So this is what we are going to write here. So this will be equal to limit as x tends to 1, right? So log of 1 minus x square, देखिए ये टर्म log of 1 minus x square, इसको मैं लिख रहा हूँ log 1 minus x plus log 1 plus x. So this will be log of 1 minus x plus log of 1 plus x, and what is the denominator? Log of 1 minus x, right? Now you can split here, right? So क्या आएगा? This will be equal to limit as x tends to 1, log 1 minus x divided by log 1 minus x. What will be answer? It will be 1 plus log of 1 plus x divided by log of 1 minus x. I hope steps are clear. So now how we are going to solve this? So 1 you can take the outside, 1 plus, now what is this form? If I am putting x is equal to 1, so log of 1 plus 1 log 2 divided by log of 0. So basically
इट इज व्हाट, क्या करना पड़ेगा यहाँ पे आपको एल हॉस्पिटल रूल लगाना पड़ेगा। ओके देखिए, this will be limit as x tends to 1 log of 1 plus x to the power log of 1 minus x. See, this is what, this is indeterminate form. Denominator देखिए, denominator check कीजिए, 1 minus 1 it will be 0, log 0 is what, infinity. So if you want to solve this, how we are going to solve this, this will be equal to 1 plus limit as x tends to 1, derivative of this, so it will be 1 upon 1 plus x divided by 1 upon 1 minus x into minus 1. ओके बहुत बार क्या होता है, हमें माइनस वन भूल जाते हैं। ओके सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो व्हाट विल बी नेक्स्ट स्टेप, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस, ओके कैसे सॉल्व करेंगे, राइट? फर्स्ट थिंग दिस विल बी माइनस limit as x tends to 1, limit as x tends to 1, so ये जो 1 माइनस एक्स है वो ऊपर चले जाएगा, 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स, इज इट राइट? सो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 डालना है, 1 minus 1 it will be 0, 0 upon 2, so it will be 0, so this is nothing but 1, राइट? सो अगेन यहाँ पे आंसर 1 ही आ रहा है, दिस इज log ऑफ एल, दिस इज इक्वल टू 1, सो फ्रॉम दिस यू कैन राइट दिस इज व्हाट, ई एल is equal to e to the power 1 minus 0, it is what, 1, is it right? Okay, so e to the power 1, which is nothing but e, right? So this will be your answer, right? So hope you have understood all the examples, and right, so I have explained you step by step. So this is a very important type, you will find the question on this number of times. So basically जहाँ पर भी 0 by 0 फॉर्म होगा, आपको क्या कैसे सॉल्व करना है, यू हैव टू सॉल्व इट बाय टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड। सो प्लीज, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं, अगर आपको यूजफुल लग रहे हैं, प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल को, और प्लीज़ आपके फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए, या मैं वीडियोस फ्री में बना रहा हूँ, राइट? सो होप आपको वो बेनिफिशियल होगा। थैंक यू।